Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I am Muhammad Shahid and today I will discuss some dialogues of HSK-1 book. HSK-1 book is a standard textbook and using this book we can prepare for proficiency tests regarding Chinese language. This is level first. मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और आज मैं आपके साथ कुछ मकालमे जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ मकालमे जो कि HSK-1 बुक से लिए गए हैं और HSK-1 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। ये किताब है चाइनीज़ ज़बान के मुख्तलिफ़ टेस्ट्स देने के लिए ये इस्तेमाल होता है और इसमें कुछ मकालमे दर्ज है तो उनको हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम जस्ट telling you that I'm addressing you from the platform of Chinese language made easy. So if you are new on the channel and you did not subscribe to our channel, please do subscribe and get the latest updates. Okay, so just let's get started. So just the heading of the topic, the chapter we see over here. So it says this, but we do not say it like this. Okay, there is a rule that if two third tone mark if two third tone marks following each other one after another, then we convert the first third tone mark into second tone mark, and the second third tone mark remains at its own place. Let me tell you that there are different tone marks in Chinese language, which we represent with different signs. So I'll just tell you that, like, this is first tone, okay, flat tone. This is second tone, rising tone, and this one is third tone, okay, and this one is fourth tone. So if you see these are tone marks, these are signs which help us that how we are going to pronounce a Chinese word. ये जो आपके सामने मैंने जो सिम्बल्स लिखे हैं, जो निशानात बनाए हैं, ये आपको मुख्तलिफ़ चीनी ज़बान के अल्फाज के ऊपर मिलेंगे। इनको हम टोन मार्क्स कहते हैं और इनका मतलब ये है कि जिस भी लफ्ज़ के ऊपर ये आ जाए तो उसको हम उसका तलफ़ुज़ कैसे अदा होगा वो हम सीखते हैं इससे। अच्छा, तो मैं बताने जा रहा था कि आप अगर देखें तो नी हाओ, अगर हम इसको देखें तो ये तो बेसिकली दो थर्ड टोन मार्क्स है। तो एक रूल है चीनी ज़बान में कि अगर दो थर्ड टोन मार्क्स एक दूसरे के मतलब एक के बाद दूसरा, एक थर्ड टोन के बाद दूसरा थर्ड टोन आ जाए तो पहला जो थर्ड टोन मार्क है वो सेकंड टोन मार्क में तब्दील हो जाता है, जिसको हम राइजिंग टोन कहते हैं। सो अ वर्ड which could be pronounced like ni hao will be pronounced like ni hao, ni hao. The first third tone mark, the first third tone mark in a word of um, two words, if two third tone marks are following each other, then we change the first third tone mark into second tone mark, which is actually a rising tone, and the second third tone mark remains at its own place. Okay, so we will not pronounce it like ni hao, but we will pronounce it like ni hao, ni hao. Hello, hello in English we call it hello. So you got it over here. अगर हम कहें कि ये हम किसको कहते हैं तो हम बेसिकली इसको कह सकते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं वो नी हाओ ऐसे बोलते हैं। Okay, so the first dialogue is if you see it says ni hao, hello, ni hao. So the first person, this person is saying ni hao. So we will say that this is person A and this is person B.
ये शख्स नंबर ए है और ये शख्स नंबर बी है, ये दोनों एक दूसरे से मुकालमा कर रहे हैं। पहला कहता है हेलो, यानी अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें तो अस्सलामु अलैकुम। दूसरा कहता है कि नी हाओ, तो दूसरा भी वही जो है वो लफ्ज़ दोहराता है, नी हाओ हेलो, वो भी हेलो कहता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से यही कह रहे हैं। अच्छा, अगर इन अल्फाज को हम टुकड़ों में तकसीम करें तो पहला लफ्ज़ है नी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये लफ्ज़ बेसिकली हम लिखते कैसे हैं ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ये ऐसे लिखते हैं और इसको हम नी बोलते हैं, और ये है तुम। ठीक है, तुम। सो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये तुम, नी तुम, हाउ गुड अच्छे। सो नी हाउ मीन्स लाइक यू प्लस good. So you're good. So we call it hello. Hello. तुम अच्छे मतलब इसका ये है, तो you plus good. Okay. So the first one, ni hao, hello. Okay. Now the next one is this. So you see, we are seeing this word. So nin is also means, nin also means you. नीन का मतलब भी तुम है, इसका मतलब भी तुम है, लेकिन अगर अदब के साथ और महज़्ज़ब तरीक़े से आप किसी बड़े को मुखातिब करना चाहे तो आप उसको नीन हाओ कह के मुखातिब कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट addressing someone who might be older than you, or if you are just using it out of respect for the person who you are addressing. So you can use nin hao, nin hao, nin hao. The tone mark and this word nin is second tone mark. So it also means the same, and also you'll see that here we got two people. So first of all, the person A is saying nin hao to these two, and these are two people, दो लोग हैं, तो उनको वो कैसे मुखातिब करता है, नीमन हाओ, नीमन हाओ. So this नी मन हाओ, नीमन हाओ, नीमन हाओ. But if we write it alone, we will say that it is ni man. Ni man means you both. You both. It is addressing. It is to address these. I mean, like two people or more than two people. So you can say ni man, ni man. And if you're using it with the rules of ni man how, so we'll say we will write it like this. We will write it like this. 你们好 hello to both of you. Hello to both of you. आप दोनों को अस्सलामु अलैकुम, मतलब ऐसे बोलते नहीं है कि आप दोनों को अस्सलामु अलैकुम, लेकिन अगर आपने दो लोगों को मुखातिब करना है या आपने एक पर्सन को, मतलब एक शख्स को मुखातिब करना है, तो आपने फिर भी वो कहना है कि हेलो, मतलब अस्सलामु अलैकुम. Okay, so we will just it is the plural. This one is the plural form of ni, plural form of niman, you both. Okay, so proceeding towards the last dialogue of this is 对不起 माज़रत ख्वाह हूँ मैं, 对不起 माज़रत ख्वाह हूँ मैं. अगर आप कोई गलती करते हैं और आप उसके लिए सॉरी बोलते हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर बेसिकली सेइंग सॉरी फॉर दैट. माज़रत ख्वाह है, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, तो उसका जवाब ये है दूसरे शख्स का, मेई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. So I hope you would have learned different words and how we are going to pronounce these words. And if you have any question, you can ask it later in the comment section. I will reply you as soon as possible. So we'll see each other in next lecture. See you, 再见.